और जो हमारी लेडीज़ हैं तो उनको भी काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने भी इस घटना का ये जो भी कुछ हुआ उसका विरोध किया, उन्होंने उसको कंडम किया और आज भी कंडम किया है। माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो विभिन्न दलों के नेताओं ने उसको कंडम किया है। मैं इसके लिए सभी दलों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबका, मैं सभी दलों के नेताओं का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इतना ही नहीं तो जो इन्होंने इसका विरोध किया और विरोध किया अगर कंडम किया ज़बरदस्त तरीके से, तो इससे इन्होंने मेरे मनोबल को और बढ़ाया है। इन्होंने मुझे दलितों के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मेरा हिम्मत और हौसला और बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, मुझे अच्छा लगता सत्ता पक्ष की ओर से, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जो अखबारों में, मीडिया में जो खबर आई है कि बीजेपी ने उस संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया, पार्टी से निकाला, ये उनका अच्छा कदम था, मैं उसकी सराहना करती हूँ। लेकिन अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उसको पद से हटाने के साथ साथ, पार्टी से निकालने के साथ साथ उसके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज कराती, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा होता। SC/ST एक्ट के तहत खुद मुकदमा दर्ज कराती। हम देर रात तक इंतजार करते रहे। जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो देर रात में लखनऊ में हमारी पार्टी के लोगों ने फिर इस मुद्दे को लेकर SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट बना है उसको लेकर तो फिर ये मामला दर्ज कराया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको लेकर जो हर तरफ जो कंडम किया गया है, और इतना ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी ने, मैंने कोई उनसे अपील नहीं की, मैंने कोई दरखास्त नहीं किया, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची तो देश के ज़्यादातर राज्यों में आज लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। मान्यवर, इसके साथ साथ जैसा कि आज बिजनेस के मुताबिक आज सदन में देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार की हाल की घटनाओं पर नियम 176 के तहत जो चर्चा हो रही है, ये मुद्दा, ये जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे माननीय उपसभापति जी, ये बात सबको मालूम है कि जब भी सत्र शुरू होता है तो किसी न किसी घटना को लेकर, तो दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज़ को लेकर हाउस के अंदर चर्चा होती है। ज़्यादातर हर सत्र में चर्चा होती है। लेकिन चर्चा होती है, सभी दलों के नेता अपना सुझाव देते हैं, सरकार भी अपनी अच्छी अच्छी बातें रखती है, अपना परफॉर्मेंस गिनाती है और आश्वासन देती है कि हम एट्रोसिटीज़ के मामले में हम काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन उसके बाद अब फिर कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में सब हवाई बनकर रह जाता है। और माननीय उपसभापति जी, तो आज जो सदन में देश के विभिन्न भागों में जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, उसको लेकर जो नियम 176 के तहत जो आज हाउस के अंदर चर्चा जो हो रही है, और मेरे बोलने से पूर्व विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। काफ़ी डिटेल में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं और अपनी बात रखी है और आंकड़े भी पेश किए हैं। पिछली गवर्नमेंट के भी आंकड़े रखे हैं, इस गवर्नमेंट के भी आंकड़े रखे हैं कि दलितों के साथ के आंकड़ों भी बताए हैं कि कितने इनके ऊपर अत्याचार हुए, अन्याय अत्याचार। तो उनको मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना, उन सब की बातों को मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना है और काफ़ी गंभीरता से भी लिया है। मान्यवर, अब मैं इस संबंध में सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 69 वर्ष व भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 66 वर्ष अब तक बीत चुके हैं। और इस अवधि में केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं और सबसे ज़्यादा जो सरकार रही है सेंटर में इस अवधि में, भारतीय संविधान को लागू होने के बाद या देश को आज़ाद होने के बाद, तो केंद्र में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने की है। लगभग 54 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सेंटर में राज रहा है।
और अधिकांश राज्यों में भी, आजादी के बाद अधिकांश राज्यों में भी इसी पार्टी का ही राज रहा है, कांग्रेस पार्टी का। और बीजेपी ने भी इस बार जो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो पहले भी इन्होंने कुछ समय तक इन्होंने हुकूमत की है, तो उसके बाद बीजेपी भी अब तक, ये 2 साल मिलाकर अब तक लगभग 8 वर्षों तक केंद्र में बीजेपी भी सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में आसीन है। और कई राज्यों में तो बीजेपी सत्ता पे आसीन है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी, आज़ादी के बाद देश का संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, या कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों के सेंटर में हुकूमत रही हो, या राज्यों के अंदर रही हो विभिन्न पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर दलित व आदिवासी वर्गों के लोगों का हर स्तर पर अभी तक भी उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी हर स्तर पर। और इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो इन वर्गों को, खासतौर से एससी और एसटी वर्गों के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानूनी अधिकार दिए थे, तो आज़ादी के बाद या भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मैं आपको वास्तव में बता रही हूँ कि 50% भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब उन्होंने इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने कानूनी अधिकार तो इन वर्गों के लोगों को दे दिए हैं, लेकिन इन कानूनी अधिकारों का लाभ इन वर्गों को तभी मिलेगा जब इनको ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इनको कानूनी अधिकारों का लाभ पूरा नहीं मिला। और खासकर सरकारी नौकरियों में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको रिजर्वेशन दिया था, आरक्षण की सुविधा दी थी, उसका भी कोटा पूरा नहीं किया गया। पदोन्नति में आरक्षण जो लंबे अरसे से इनको मिल रहा था, तो सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इनकी थोड़ी लापरवाही की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो जब इस मामले के विरोध में कुछ लोग उधर कोर्ट में गए, सही पैरवी ना करने की वजह से, तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी निष्प्रभावी हो गया। हालांकि पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमारी पार्टी ने इस मामले को उठाया, राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हुआ कि इनको पूरा लाभ मिल जाए, लेकिन राज्यसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में ये लटक गया। तो अब हम ये सोच रहे थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो ये, और लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत है, तो लोकसभा के अंदर तो इस मामले को ये जरूर, जो पदोन्नति में आरक्षण है, इस मामले को ये जरूर गंभीरता से लेगी और इसको लेकर जो संवैधानिक संशोधन विधेयक आया इसको पास कराएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप बीजेपी वाले के लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब इस साल 125वीं जयंती थी, तो इन्होंने बहुत कुछ उनकी जयंती को मनाने के लिए पूरे देश के दलितों को किस्म किस्म के लालच दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तरफ तो ये लोग दलितों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की आड़ में दलितों को किस्म किस्म के आश्वासन दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की जो के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, तो इन्होंने अपनी सरकार के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को देकर, तो इनका जो आरक्षण था एससी एसटी का, इसको एक प्रकार से निष्प्रभावी बना दिया, ना के बराबर इसको दे दिया। जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जुडिशरी में जब हम एट्रोसिटीज की बात करते हैं, दलित शोषित समाज के लोगों के ऊपर, एससी एसटी लोगों के ऊपर जब हम एट्रोसिटीज की बात करते हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म जाति आए दिन बढ़ रही है, तो लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता।
इनके मामले कोर्ट कचहरी में वर्षों तक चले जाते हैं। जिनके ऊपर जुल्म जाती होती है वो बेचारे मर भी जाते हैं, तब वो केस अपना रफा दफा हो जाता है। जुडिशरी में इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इनको वहाँ इनके लोग नहीं है वहाँ कोई रिजर्वेशन की, हायर जुडिशरी में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो ये लोग बेचारे काफ़ी दुखी हैं। और इन सब का माननीय उपसभापति जी ये मैं बताना चाहती हूँ कि इन सब का मुख्य कारण केंद्र राज्यों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र और राज्यों में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं उनमें से अधिकांश सरकारों की इन वर्गों के प्रति अभी तक भी इनकी पूरे तौर से हीन व जातिवादी मानसिकता का नहीं बदलना है। यानी कि केंद्र और राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं तो अधिकांश केंद्र की सरकार और अधिकांश राज्यों की सरकारों की जो दलितों और आदिवासियों के प्रति जो उनकी हीन और जातिवादी मानसिकता है जो पुरानी चली आ रही है, संविधान लागू होने से पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी वो सोच अभी तक नहीं बदली है। संविधान तो लागू हो गया है लेकिन प्रैक्टिकल में तो आज भी मनुवादी जो व्यवस्था है वो उसको ये लोग लागू करते हैं और उसी सोच के तहत इनका उत्पीड़न हो रहा है। यही मेन कारण है कि संविधान तो लागू हो गया, लागू करने वाले लोग ज्यादातर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, पुरानी हीन व जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है। और यही मुख्य वजह है कि जब दलितों के ऊपर देश के किसी भी राज्य में जब दलितों के ऊपर कोई भी जुल्म जाती होती है, उत्पीड़न होता है तो उनको न्याय देना तो बहुत दूर की बात रही, उनकी FIR तक भी जल्दी से नहीं लिखी जाती है। ये मैं आपको सही रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। और इस बात का ताजा उदाहरण गुजरात के ऊना का दलित उत्पीड़न का प्रकरण है। आपको माननीय उपसभापति जी, जैसा कि ये सर्वविदित है कि गौ रक्षा के नाम पर जब सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनी तो इस सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। तो पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर तो गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश के अंदर तो सबसे पहले धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुसलमानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ गौ रक्षा के नाम पर। और अब तो दलितों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। गौ रक्षा के नाम पर तो दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर इसकी आड़ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। और अकेले गुजरात में नहीं और खास तौर से देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो बड़े पैमाने पर गौ रक्षा के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा। पहले मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हुई और वो तो खैर अभी नहीं बंद हुआ, अब दलितों को भी नहीं छोड़ा गया। और ऊना के अंदर क्या हुआ, गुजरात स्टेट में जो ऊना है तो वहां पर गौ रक्षा के नाम पर जो असामाजिक जो तत्व हैं, जो दलित विरोधी तत्व हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो वो अपना काम कर रहे थे चरमकारी का, उनके साथ जो जुल्म जाति किए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। ये बात मैंने काफ़ी कुछ 18 तारीख को ये बात मैंने माननीय सदन में रखी थी। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से उनका शोषण किया गया वहाँ पर और सरकार चुप रही और जब इस मामले को मीडिया ने चैनल ने इसको दर्शाया और खास तौर से 18 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ और जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, मैंने प्रेस नोट जारी किया। 18 तारीख को ये मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया, राज्यसभा में मैंने उठाया। और इतना ही नहीं, 18 तारीख के बाद जो दलित वर्ग के लोग हैं गुजरात के अंदर, उनका थोड़ा हिम्मत और हौसला बढ़ा। वो लोग सड़कों पर आए जुल्म जाति के खिलाफ और जिनको न्याय देने के लिए सरकार आगे आए तो उसकी बजाय उनका मुंह बंद करने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। माननीय उपसभापति जी, मेरा सरकार को ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मामला अति गंभीर है। आपकी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की सरकार से बात करके जिन लोगों के साथ गौ रक्षा की आड़ में जो उत्पीड़न किया गया, नवयुवकों का जो है, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई गई है, तो माननीय उपसभापति जी, मेरा सरकार को ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहाँ आपकी सरकार है, आप सरकार से बात करें। 2 मिनट, आप उनको न्याय दिलाएं। और इतना ही नहीं, आपने वहाँ पर हालांकि अपने मुख्यमंत्री को वहाँ पर भेजा, ये अच्छा कदम है, लेकिन मुख्यमंत्री को भेजने से ही काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जो
जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जब ये घटना घटी उनको तुरंत मौके पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है तो सरकार ने उनको निलंबित तो किया है। निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, 7-2 साल में वो फिर दोबारा से रीस्टेट हो जाएंगे। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है उन अधिकारियों को आगे दूसरे अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाए, अपनी ड्यूटी को। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट को कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कि उन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करके तो उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, इस मामले की हमारी मांग ये है, इस प्रकरण को लेकर एक मिनट, मैं जो मेरी डिमांड है, तो सरकार को मेरा ये कहना है कि इस मामले की वहाँ की सरकार ने CID से जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आपको सरकार को मालूम है और श्री राजनाथ सिंह जी को भी ये मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको अभी तो गृह मंत्री हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि CID जांच का मतलब क्या होता है। जो CID जांच जो है, या तो मामले जो दोषी लोग होते हैं उनके बचाने का मामला होता है, या मामले को लटकाना होता है, लटकाकर उसको बचाने का होता है। और CID में ज्यादातर जो जांच होती है तो उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से बात करें इस मामले की, तो CID से जांच कराने की बजाय, क्योंकि जब मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ पूरे देश ने देखा है कि जिन लोगों ने उनकी पिटाई की है, बेहतर यही है कि वहां की सरकार तो जो संबंधित थाना है तो थाने के अंदर ईमानदार पुलिस कर्मी की वहां पर बैठाएं और मामले की मामले को वो लोग देखें और इस मामले की जल्दी से जल्दी फाइनल चार्जशीट लगें और चार्जशीट लग इसके बाद फिर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुना जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये मामला सुना जाना चाहिए। CID का मतलब वो तो लटका रहेगा और समयबद्ध होना चाहिए और इस मामले की सुनवाई समयबद्ध होनी चाहिए और इस कोर्ट में एक जज शुल्काश का जरूर होना चाहिए। हालांकि एक जज होता है, आप चाहें तो सरकार चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है, 2 जज हो सकते हैं, एक जनरल आप ले लीजिए, एक शुल्काश का ले लीजिए और इसमें एक की बजाय 2 जज भी रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये सुनवाई वहां के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की मांग है, वरना असली दोषियों को जल्दी सजा नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही फिर ये केस भी यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ ही फिर ये केस भी 1 मिनट 2-3 मिनट तो हैदराबाद में हुए रोहित वेमुला कांड की तरह ही लटक के रह जाएगा। और इस संदर्भ में मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, इसकी सुनवाई के लिए समयबद्ध, और इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सन 1997 में महाराष्ट्र में बीजेपी व शिवसेना की मिलीजुली सरकार के दौरान मुंबई की रमाबाई कॉलोनी में कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, प्रतिमा पर जूतों की माला पहनाई गई, लोगों में गुस्सा हुआ, लोग एजिटेशन किया और वहां पर गोली चली। नतीजा क्या हुआ, मौके पर ही 10 दलित वर्ग के लोग मार दिए गए थे। उस समय यूपी में मेरी सरकार थी, मैं वहां पर गई, उनकी आर्थिक मदद की और इससे काफी लोगों ने एजिटेशन किया, लेकिन फिर भी जो दोषी लोग थे उनको सजा दिलवाने में कई साल लगे थे। और इतना ही नहीं, ये महाराष्ट्र की घटना है, और इतना ही नहीं, सन 2006 में जब वहां महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही थी तो उस दौरान विदर्भ के भंडारा जिले के खैर लांजी गांव में एक ही परिवार के साथ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा काफी शर्मनाक व अमानवीय वाला उत्पीड़न किया गया। एक बच्ची थी, एक महिला थी, उसका पहले रेप किया, उनको फिर मारा, 2 आदमियों को और मारा, 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई। लेकिन इसके बाद ये मामला कई साल तक कोर्ट में चलता रहा और तब जाकर जो दोषी लोग थे तो उनको उम्र कैद हुई है और वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं
इसलिए थोड़ा सा दलितों के मामले में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले, सभी दलों की आप मीटिंग बुला लीजिए, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जब देश के अंदर जो गंभीर मामले होते हैं दलित शोषितों के ऊपर उत्पीड़न के, तो उन मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जरिए होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जो आपराधिक तत्व हैं फिर उनकी जल्दी से हिम्मत ना हो कि उनको वो जुल्म जाति का वो शिकार बनाए। और मैं अब और कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहती, हालांकि ऐसे अनेकों और उदाहरण हैं, मैं उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब केंद्र में कांग्रेस पावर में होती है और बीजेपी वाले इधर विपक्ष में होते हैं, और जब देश के किसी भी राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, गंभीर घटना होती है, तो विपक्ष में बैठे हुए जब कांग्रेस उधर पावर में होती है तो बीजेपी वाले उसको उठाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। और जब बीजेपी वाले उधर सत्ता में होते हैं, ये विपक्ष में होते हैं, ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए और दलितों को राजनीतिक हथियार बनाने की बजाय जो उनके ऊपर आए दिन जुल्म जाती हो रही है हर स्तर के पर, मैं समझती हूँ सरकार को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी इसको गंभीरता से लेते हुए इनको जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और इस मामले में हमारी पार्टी सरकार कोई आगे आती है, कोई पहल करती है, तो हम इस मामले में हम आपका पूरा सहयोग देंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ ये जो पूरे देश के अंदर जो दलितों के ऊपर हर स्तर पर जुल्म जाति हो रही है, ये अति चिंता का विषय है और जुल्म जाति कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं समझती हूँ सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मेहनत कश लोग हैं, और ये लोग किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जुल्म जाती होती है तो मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। कोई रास्ता निकालो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकालो ताकि इनके ऊपर जुल्म जाती होना। आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। That is well said. Treat with this above politics. Very correct. Now, Sri Majid Memon. Deputy Chairman. Eh? Really, you should see to be no. See, do you object to be generous to women? Jaya Bachchan ji, do you object to be generous to be women? Not at all. Not at all. You are generous to only one party, sir. That's my. I have complete support, and one party. I understand, and I really feel bad for whatever atrocities are going on with the Dalits. But I'm just saying, sir, because you stopped me so many times. You always press the bell 1 minute before the time is over. So I'm just making an observation. Honestly, I hope it's taken in the right spirit. Honestly, Jaya ji, honestly I can tell you, I did not find anything irrelevant in what he said. Of course not, sir. We are not debating that. We are not debating. Whatever she said was relevant. So I could नहीं, we are not debating. सर वो बात हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, सर. हम वो उस बात के डिबेट ही नहीं कर रहे हैं. Okay. You know what we are discussing, and certainly subject has also certain value. Yes. सर मैं निर्भया कांड के वक्त जब आपने मुझे रोका था, उस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. I don't remember these things. Exactly, so I do because I felt the atrocity was on me at that time. I do. I will never forget that, sir. I don't know. Yes, it's on record. You can see it. I don't know what you mean and what you said. I don't know. Yeah. Usually I am trying to be fair to every member, every member, irrespective of whether he is male or I am trying. Maybe sometimes human see, but one thing also there. See,
error is human. Maybe human nature will sometimes, even if you want to be perfect, you may commit some error. But my intentions are always correct, to be fair to everybody. And I know now I was only fair to Kumari Mayavadi, which she deserved. I did that. That's all. Now, Menonji. Yes. Memanji, yes, please. Let me begin with the remembrance to the Constitution of India, under which we, all the members, have taken oath before entering this house. The Constitution opens with "we the people," and that "we the people" phrase, I believe, and I firmly believe, includes 170 million Dalit Indians. Now, they cannot be distinguished or discriminated against as far as all the facilities of the country are concerned. Article 14 of the Constitution talks of equality before law, but when two persons are placed before a court together, one Dalit and second non-Dalit, basically they are not equals when they are before the court, because they are socially unequal, they are economically unequal, they are educationally unequal, and therefore the whole spirit of equality before law gets wounded. So it is the society which has to treat a Dalit and a non-Dalit equally, socially, economically, and educationally, which unfortunately is not happening. Now, there are a number of other provisions with regard to protection and a helping hand to be extended to Dalits, because admittedly they are left behind from the mainstream. Dr. Babasaheb Ambedkar way back had said that we need to bring them up in the mainstream, for which extra efforts are required to be taken. Under the Constitution, we find that we have National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have appointment of a commission to investigate the conditions of scheduled caste under Article 341. We have various provisions under the Constitution, and I'm afraid that when today we are discussing atrocities on Dalits and scheduled caste people, we are believed to be violating those constitutional provisions. We are infringing the Constitution, and I'm afraid that some of us may even have a introspection to see that are we committing the breach of oath that we have taken to be in this house, and more particularly those who are in power. Now, I would say that as far as the present incident is concerned, caste-related violence has occurred and occurs in India in various forms. According to a report by Human Rights Watch, Dalits continue to face discrimination, exclusion, and acts of communal violence. Laws and policies adopted by the Indian government provide a strong basis for protection, but are not being faithfully implemented by local authorities. For the last few days in Gujarat, Dalit community has been seething with anger over the public flogging of a group of Dalits who were skinning a dead cow in Mota Samadhiala, a village near Una town in Saurashtra region on July 11. 4 of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV, and paraded in the main market near the local police station in Una by members of local cow vigilant group, Gau Raksha Samiti, Cow Protection Committee. The flogging was filmed, posted on Facebook as warning to other Dalits that if they repeat, they would be treated like this. The video went viral, filling the community with anger, and led to an eruption of protest across the state, in which more than 20 attempted suicide, dozens of vehicles were torched or vandalized, highways blocked, and 1 policeman died of injuries sustained during the stone pelting. What transpired at Una was only the latest atrocity on the scheduled caste, which form around 7.5% of the total population in the state of Gujarat. Earlier in July, a Dalit farmer was killed by villagers when he tried to cultivate a common grazing land in a village near Porbandar. Only in April this year, a 31-year-old Dalit, Ketan Turadia, a clerk in a local court in Ahmedabad, committed suicide, alleging
discrimination in the workplace where he had constantly faced caste abuses. According to leading social activist Martin McVan, whose organization Now Sarajan Trust is the largest Dalit body and which works in 3,000 villages in Gujarat, Dalit face rampant discrimination at all levels in Gujarat. Most of them are not allowed entry into temples in village. They have their own crematorium because upper castes don't allow Dalits to be cremated in common crematorium, Mr. Makwan said. In 2012, 3 Dalit youths were killed in police firing in Thangarth town of Surendranagar district. The state government, then headed by the Chief Minister, the present Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, had set up a 3-member committee to inquire into the incident and submit a report. Till date, the government has not made that report public. According to Mr. Makwan, atrocities against Dalits in Gujarat are committed with impunity. However, there is one difference this time. Social media has made the difference, and for the first time after 1985, Gujarat is witnessing such a strong protest by the Dalit community in the state. According to National Campaign for Dalit Human Rights, every year 13,000 to 15,000 cases of atrocities against Dalit and 3,000 to 3,500 cases of untouchability are registered in India. Even after the abolition of caste system, Dalits or untouchables continue to face caste discrimination. Over 1/6 of India's population, about 170 million people, live a precarious existence, shunned by much of Indian society because of their rank as untouchables or Dalits, literally meaning broken people. At the bottom of India's caste system, Dalit are discriminated against, denied access to land and business resources, forced to work in degrading conditions, and routinely abused at the hands of police and dominant caste groups and enjoy state's protection. Historically, the caste system has formed the social and economic framework for the life of the people of India. In its essential form, this caste system involves the division of people into a hierarchy of unequal social groups where basic rights and duties are assigned based on birth are not subject to change. Dalits are outcasts, falling outside the traditional 4 classes of Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra. Dalits are typically considered low, impure and polluted based on their birth and traditional occupation. Thus, they face multiple forms of discrimination, violence and exclusion from the rest of the society. Dalit women face the triple burden of caste, class and gender. Dalit girls have been forced to become prostitutes for dominant caste patrons and village priests. Sexual abuse and other forms of violence against women are used by landlords and the police to inflict political lessons and crush dissent within the community. Less than 1% of the perpetrator of crimes against Dalit women are convicted. The plight of India's untouchable elicit only sporadic attention with the country. Public outrage over large-scale incidents of violence, or particularly egregious examples of discrimination, fades quickly, and the state is under little pressure to undertake more meaningful reforms. Laws granting Dalit special consideration for government jobs and education reach only a small percentage of those who are meant to benefit. Laws designed to ensure that Dalits enjoy equal rights and protections have seldom been enforced. Instead, police refuse to register complaints about violation of the law and rarely prosecute those responsible for abuses that range from murder and rape to exploitative labor practices and forced displacement from Dalit lands and homes. Laws and government policies on land reform and budget allocations for the economic empowerment of the Dalit community remain legally unimplemented, largely unimplemented. Dalits who dare to challenge the social order have often been subjected to abuses by their dominant caste neighbors. Dalit villages are collectively penalized for individual transgressions, though through social boycott, including loss of employment. Sir, I'll take 2 minutes more.
and You access can to speak water, very well, then why do grazing you lands read? and ration shops. For most Dalits in rural India who earn less than a subsistence living as agricultural laborers, a social boycott means destitution and starvation. I'll Mr. quote at the end, One second. sir, Mr. I'll wind up. Mr. Baba Sahib Ambedkar, Okay. who brilliantly said long ago, which is so relevant even today, I quote, "My final words of advice to you are educate, agitate, and organize. Have faith in yourself. With justice on our side, I do not see how we can lose our battle. The battle, to me, is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is the battle for reclamation of human personality. It is in the fullest sense spiritual." Unquote. Thank you very much, sir. Okay. See, Memanji, the chair is expected not to encourage written speech. When a person like you who can make even an extempore speech, what is the need of reading a speech? This is, I am speaking for everybody, everybody. See, even those who can make, even those who can make very good speech, even without preparing, who can make extempore speech, sometimes they also prefer reading. That is not actually expected. So, that's all what I am saying. I am not casting aspersion on anybody, but of course, in the beginning, though, see, beginning, that is what I am saying. No, it is fine. It is to be observed for everybody. Yeah, it's everybody I am saying. Yeah. I am only saying chair is, what I said is chair is not expected to encourage. That means, you see, you can refer the paper, look at the paper, take the points and say. But reading dicto, that is what I am saying. That should not be. Sir, it was only, sir, it was only a substance of what I wanted to say. That you can always. If it is shorter time. Now you can go through it. You can. Sir, you can take. Sir, I would have spoken extempore if you were gracious enough to grant me 20 minutes. Then I would have given more. Definitely. I am telling you. See, whenever somebody is reading, I am forced to ring the bell. If it is extempore speech, if it is prepared speech, then I will allow more time. Naturally, I am telling you. This was only substance of what I wanted to say. I agreed. I am not blaming anybody. I am not blaming you also. But this is a guidance for every member. As far as possible, come prepared and make your speech rather than reading a written speech. That's all. Yeah, Raja always written. Therefore, he gets the privilege. All Rajas are privileged people, and he is more privileged. So next is Tulsi. Therefore, I am calling Raja now. Yes. Mr. Tulsi is not here. Raja. Thank you, sir. With a kind of sadness and shame, Next round. with a kind of anger and agony, I would like to participate in this debate. I have spoken on Dalit question and the way forward on several occasions in this August House. Today, really, I speak with shame and a kind of sadness. How long we will be discussing this question? What Dalits want, sir? Do they want sympathy of others? No, not at all. Do they want empathy from others? Not at all. Do they want pity? Not at all. What Dalits want, they must be treated as human beings. Absolutely. That is what Dalits want. They should be treated as human beings. Absolutely. Sir, pity is degrading the human being. I am compelled to quote one famous Russian author,
Maxim Gorky. He said, human being must be respected, not pitied. Pity is degrading the human being. So Dalits do not want pity. Dalits do not want sympathy. Yeah, Viplavji, what are you doing? Dalits do What are not you want doing? any empathy from anybody. They should be treated as human beings. That is what they want. Whether the so-called grand, ancient civilization of India treats them as human beings. That is the question we should pose. Sir, Honorable Home Minister is present. I'm glad you are present throughout the debate. Sir, you are in charge of internal security, but which is the most challenging task before the Home Ministry to secure the internal security? I must say, you must stop the lynching of Dalits that is going on in the country. Look at the nature of crimes. Look at the nature of atrocities. And as Tamil Nadu Chief Minister called, there was verbal whiplash against one of the topmost leaders of our country, Sister Mayawati. And look at the incidents that have taken place in different parts of the country. Sir, in Madhya Pradesh, the shade of one Dalit girl fell on non-Dalit person, so-called non-Dalit person. She was lynched. The shadow of one Dalit girl. And in Maharashtra, in Shirdi, one Dalit boy was having a telephone which had Ambedkar ringtone. He was lynched. He was lynched in Haryana. A Dalit girl, she was gang raped 3 years back. And she migrated from her native place to another town. You all know which is that town, Rohtak. And she gathered strength to overcome the trauma, and she started going to college. The same accused, they come on bail and they pressurize her to withdraw the case. When she refuses, again she subjects her to gang rape. What is happening in our country, sir? I can go on narrating. In Gujarat, what is that? Skinning of cows. Skinning of cows. And government has not banned the leather industry. Government has not ordered closing down of tanneries in the country. But skinning of cow becomes a crime. What is this happening in Gujarat? What is this happening in Gujarat? Sir, Hyderabad Central University, that was also lynching of Rohit Vemula. He was forced to commit suicide because he was a Dalit. So this is the issue the Home Minister should take note. Sir, in fact, I was hoping at some point of time the Prime Minister will come and sit in the House and he will listen to the debate, because Prime Minister went to US. He went to US Congress. I'm happy the Indian Prime Minister went to US Congress, made a speech. What did he speak in US Congress? The Constitution is the holy book for India. The Constitution is the holy book for India. He took the name of Dr. Ambedkar. He took the name of Mahatma Gandhi. I felt happy. The Indian Prime Minister taking the name of Dr. Ambedkar, Prime Minister of India taking the name of Gandhi and declaring that Constitution is the holy book for India. Sir, Prime Minister should have come for some time and listen the anguish of Dalits in this country. What is happening, sir, today? There are attempts to subvert the Constitution. There are attempts somehow to replace the Constitution with the ideals of Manusmriti. I'm making this statement very consciously, and I can refer the books, how it is happening. Sir, it is very shocking, it is very challenging, and it is a challenge to the very Constitution. Dr. Ambedkar
we all take the name of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar said, fraternity is the another name for democracy. Fraternity is the another name for democracy. Democracy is the way of life. Do we understand the meaning of democracy? I am asking in this August House, when Ambedkar talked about fraternity, that fraternity can be guaranteed only when there is liberty, only there is equality. Fraternity, liberty, equality, they form a trinity and they cannot be separated from one another. That is the understanding of Dr. Ambedkar. But what is happening today? What is happening today? It is a lofty declaration in the Constitution. We the people secure fraternity, equality, liberty, all those things. But do the Dalits have the equality? Do the Dalits have the liberty to enter into temples? Do the Dalits have the liberty to walk on any street? Even educated Dalits, now we keep talking about reservation and Dalits have emerged, a new section has emerged. Yes, a new section has emerged. Do they have dignity in social life? I am asking why there are modern forms of untouchability practiced in India. Untouchability. I am not shocked when Dalits, the black people, came on the streets challenging the American authorities. I am not surprised. It is happening in America. And how long Dalits can go through this suffering, go through this hardship? I am asking today, everyone should touch their conscience and speak out. Speak out. Why our own citizens, our own fellow human beings, they are subjected to such unimaginable crimes, atrocities. Sir, Okay. I am quoting why I wanted Prime Minister to come and listen to this debate. In 2004, Madhya Pradesh government, that time which was the party in power in Madhya Pradesh, you all know, 2004, the Madhya Pradesh government issued an ordinance banning cow slaughter. The ordinance interestingly refers to Manusmriti. I am quoting, Manusmriti ranks the slaughterer of cow as predator and prescribes odd punishment for him. So Manusmriti has said, so it has to be done. What happens to Indian Constitution? And Prime Minister went to US Congress. I wish he should have gone to Columbia University, where Dr. Ambedkar studied. In Columbia University, there is a bust of Ambedkar. Before that bust, there are two books. I saw those books. One, the earlier edition of Indian Constitution, cloth-bound edition. The other book, Annihilation of Caste. It is symbolic. It conveys a message. If this constitution has to survive, if this constitution has to be upheld, annihilation of caste, establishing equality, they are imperative. Yes, please. Sir, finally I finish with one thing, sir. There are right-wing forces, they may call fringe elements, but they are organized right-wing forces in the country. They believe in Manusmriti and they want to take this country backward in history. And this country can never be taken backward. This country will move forward. Okay. And this country will move forward. Sir, let me quote, even you will like it, sir. You will like it, sir. There are people in power. There are people very close to power. They are influenced by the bunch of thoughts of Mr. Golwalkar. And I quote what Mr. Golwalkar has written in Bunch of Thoughts. The Hindu people, they said, is the Virat Purusha, the Almighty manifesting himself. Though they did not use the word Hindu, it is clear from the following description of the Almighty in Purusha Sukta, wherein
it is stated that the sun and the moon are his eyes, the stars and the skies are created from his nabi, and the Brahmin is the head, Kshatriya the hands, Vaishya the thighs, and Shudra the feet, and of our God. This supreme vision of Godhead is very core of our concept of nation and has permeated our thinking and given rise to various unique concepts of our cultural heritage. Okay, now please. Sir, this is the challenge today we face. We can argue for economic empowerment of Dalits. There should be Dalit, scheduled caste sub-plan. There should be a central legislation for that. We can go on demand. Now there is Niti Ayog. Yes, now conclude. I am concluding, sir. In the absence of planning commission, Niti Ayog is responsible for plans or not. Why do you bring Niti Ayog here? So that is one issue, sir. Economic empowerment, Okay. social empowerment, political empowerment of Dalits are important, for which the government will have to act. Government will have to act. This government, whether it will act or not, Home Minister should explain, Prime Minister should explain. Okay, please. Because those Rajaji, that is enough. You commit spoke these very heinous much. crimes, they are close to the government. Yeah. They are close Rajaji, to the power. please. That is where I am questioning the Raja. government. I am questioning the government. There is an act, scheduled caste, scheduled tribe, now prevention of that attacks. is enough. You spoke But enough. how it is implemented? Yes, Raja. So, sir, we can go on discussing these issues. Finally, as a nation, How many finally? as a parliament, how we are acting on these Okay. issues. That With that matters. note, you can sit. Whether government will act Now or sit. not, that is Okay. the